मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली कॉन्सेप्ट विच इज़ रियली वेरी सिंपल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलर? What do you understand by seller? What do you understand by the word seller? Quickly. Yes, answer me. And what do you understand by the word buyer? Anyone? Hi Ram. Akanksha is also there. Quickly. Yes, seller is a person who sells the goods. Buyer is a person who buy the goods. As simple as it is. आप लोग सब भी शॉपिंग करने जाते होगे लाइफस्टाइल में. Lifestyle is a seller for you. He is selling the goods. And you customer, as a customer, what you're going is a buyer. You're buying the goods. Yes or no? Quickly बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे. बेटा सारे बच्चे सिर्फ क्लास में आए हैं बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी. दिस इज नॉट डन. दिस इज नॉट डन. You have to respond to me. Seller and buyer is a basic term. Okay. अब मुझे एक बात बताओ. सेलर जब माल बेचेगा बायर को क्या एंट्री करता है? When seller sell goods to buyer, क्या एंट्री करेगा सेलर? यस, ये एंट्री करेगा. अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, इसके पास कैश आएगा. किससे? बायर से. बायर अकाउंट क्रेडिट. इज इट राइट और रॉन्ग? मैम इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. नो डाउट कैश आया है, बायर ने दिया है, बट दिस डजंट मीन्स कि आप बायर से पैसा ले रहे हो. रॉन्ग पूनम, आपकी भी एंट्री गलत है. अब देखो गलत कहाँ जाते हैं बेटा. जनरली वी फील कि जब हम किसी को माल बेचते हैं, नो डाउट सामने वाला बंदा हमें पैसे दे रहा है. नो डाउट सामने वाला बंदा हमें पैसे दे रहा है, बट वो हमें पैसे क्यों दे रहा है उसका रीज़न इम्पॉर्टेंट होता है. और वो हमें पैसे क्यों दे रहा है उसका रीज़न इम्पॉर्टेंट होता है. यस, पैसे किससे आ रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे क्यों आ रहे हैं उसका रीज़न इम्पॉर्टेंट होता है. तो मुझे बताओ, अगर सेलर माल बेचेगा तो उसके पास कैश आएगा, वो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा. यस. और मुझे एक बात बताओ, बायर उससे पैसे क्यों दे रहा है? बिकॉज उसने माल खरीदा है. सेलर को पैसे क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज वो माल बेच रहा है. तो इसका मतलब बेटा सेलर के पास पैसे आ रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स. ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स. यस. तो बच्चों यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेरी केयरफुली. व्हेनेवर यू सेल गुड्स, अगर कैश तुम्हारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट. एंड रीजन why you are getting this cash is sales, because you are selling your goods. So sales account is an income and income is always credited. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब मुझे बताओ बायर की एंट्री करेगा. बायर के लिए परचेज है, परचेज ऑफ गुड्स. यस. और बायर के पास क्या निकल रहा है? बायर के पास से कैश निकल रहा है बिकॉज उसने गुड्स परचेज किया है. उसने गुड्स परचेज किया है. तो बायर के लिए परचेज है और रीजन उसके परचेज के कारण इसके पास से क्या निकल रहा है बच्चों? कैश. क्लियर है यहां तक? आकांक्षा, दैट इज ऑल्सो राइट, बट वो एंट्री तब होगी जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. वो एंट्री तब होगी जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. फिलहाल मैंने कैश ट्रांजैक्शन रखा है तुम्हें समझाने के लिए. इज द पॉइंट क्लियर? तो याद रखना, when seller sells the goods, he writes the entry as cash account debit to sales. अगर कैश में माल बेचा. And if purchaser purchases the goods, इसने माल कैसे खरीदा है? कैश में परचेज किया है. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन में कोई टेंशन है या कोई टेंशन नहीं है?
मैम कैश ट्रांजैक्शन में सबसे कम रिस्क होता है, बिकॉज माल बिक गया, पैसा आ गया, माल बिका, पैसा आया, वी आर रिस्क फ्री। हमारे पास से माल बिक गया और हमारे पास पैसा आ गया, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, हम रिस्क जोन में है ही नहीं, हम रिस्क जोन में है नहीं। एम आई क्लियर? वी आर नॉट इन एनी रिस्क जोन, करेक्ट। बट अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, वी आर ऑलवेज इन रिस्क जोन। आप खुद सोचो ना बेटा, जब आप किसी अपने फ्रेंड को, आप अपने किसी दोस्त को 50 रुपये भी देते हो, दिमाग में टेंशन होती है या नहीं होती है कि वो मुझे पैसे नहीं देगा वापस? वो मुझे पैसे नहीं देगा वापस। तो इसका मतलब बेटा, व्हेनेवर देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तब रिस्क एसोसिएटेड होता है, टेंशन एसोसिएटेड होता है। बट जब कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, न रिस्क एसोसिएटेड होता है, न टेंशन एसोसिएटेड होता है, और हमने सिर्फ माल बेचा, पैसे आ गए, स्टोरी फिनिश। बेटा लाइफस्टाइल में हर दिन हर पल कितने कस्टमर्स आते हैं, और जनरली लाइफस्टाइल हमेशा कैश में ही काम करेगा या बैंक पेमेंट के थ्रू, उधार का कोई स्कोप ही नहीं है। तो डोंट यू थिंक उस इंडस्ट्री में लॉस के चांसेस बहुत कम है? उस टाइप के इंडस्ट्री में लॉस के चांसेस बहुत कम है। यस मैम। तो बेटा यहाँ पर एक लॉजिक हमेशा याद रखना, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में रिस्क नहीं है, सॉरी, cash transactions and credit transaction. In cash transaction, there is no risk. There is no risk associated with it. Transactions get immediately settled. The seller is with a free mindset. The seller do not need to know what is the buyer credit score. The seller do not need to know how is the buyer performance in the market. We got the cash on account of sale of goods. From which person we got the cash is not relevant. Only relevance is reason. And the same in terms of buyer. Buyer has given out the cash from him on reason he has purchased the goods. Other than that, buyer has to do nothing with the seller's personal life, personal business or anything. Clear? This are termed as cash transactions. These are termed as cash transactions. Now you guys need to understand what is the risk in case of credit transactions. Credit transaction in simple terms means उधार, मतलब सेलर ने बायर को माल बेचा, बायर ने सेलर से माल खरीदा, पर ट्रांजैक्शंस इमीडिएटली सेटल नहीं हुए थ्रू कैश और बैंक। ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल नहीं हुए थ्रू कैश और बैंक। एम आई क्लियर बच्चों? यस। अगेन आई एम गोना राइट टू पार्टीज नेम। वन इज अ सेलर, another is the buyer. One is the seller, another is a buyer. Seller sold its good to buyer, sold goods. Buyer has purchased goods. ठीक है बच्चों? Yes. For seller, sales of goods is income, so sales account will be credited. For buyer, purchase of goods is an expense, so purchase account will be debited. Yes, sales of goods is an income, so seller will credit it. Purchase of goods is an expense, so the buyer is gonna debit it. Clear? Now you have to think. Did seller get the entire amount? No. The transaction is still in the zone of risk. The transaction has not got complete. Seller will always wait for the buyer till the time the buyer do not gives the entire amount.
He will always keep a track of buyer's business going in the market. We'll always try to be in touch with the buyer so that the buyer doesn't forget to pay it to seller. The seller will always try to know about its credit score or credit worthiness in the market. इसका मतलब seller is in the brain of risk. Seller is in the risk zone. Seller is in tension. तो क्यों? Because the transaction has not got complete. It is pending. So in this case, seller will take the amount from buyer in future. So buyer account debit to sales. Buyer account debit to sales. Future may we have to take this amount from buyer and we may forget the name of the buyer. It's better to pass the journal entry with the name of buyer. Take the money from buyer on account of sales. When the buyer has purchased the goods, he has not given its payment. He is tension free, but no doubt he has to give the payment in future. And for that buyer, the seller is the liability that he has to settle in future. So what will he write the entry? Purchase account debit to seller. Buyer is an asset for seller. Sales is an income. Purchase is an expense for buyer. Purchase is an expense for buyer. And seller is the liability for the buyer. यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर है? How many of them are clear with this concept? How many of them are clear with this concept? What is the tension associated with cash transaction and what is the tension associated with credit transaction? What is the risk associated? Why do we need to know the buyer's name in case of credit transaction? Why we don't need to know the name of the buyer in case of cash transaction? Chalo. Now I'll ask with you something related to your common sense beta. At times beta, आप जब फीस पे करते हो अपनी स्कूल की, आप फीस पे के चले जाते हो या you need a proof for that supporting it. You have paid the fees. Once you have paid the fees, you just pay the fees and go back home, or you need a supporting for it. You need a supporting for it, or you just pay your fees and go away. Quickly बताएंगे बच्चों. We need a supporting. Yes, we have paid the fees. We have got an invoice copy. In future, if there is any discrepancies with me or with my school or the center, tuition center, coaching center, we have a proof that we have paid the fees. So it is just a proof to cross check the things. It is a proof to cross check the things. Same is happening in this situation, beta. Buyer and seller has undergone a transaction. No doubt they have exchanged an invoice and that invoice clearly states that the buyer has to pay the amount to the seller. It's a credit transactions. ठीक है, the amount is clearly evident. But मुझे एक बात बताओ बच्चों, does invoice tells us it is credit? Yes, no doubt many people write in the invoice pending amount. Many people write in the invoice pending amount is this, which is again an evidence that the transaction has been done on credit. It is again an evidence that the transaction has been done on credit. But don't you think beta anybody can write on the invoice credit? After you got an invoice from Lifestyle and it is signed, but still you can write credit with your handwritten. You can write credit at any place with your hands. इसका मतलब the invoice copies can be tempered. It can be changed as per the requirement. No doubt it is a proof, but it is not a final proof because at times the people change the invoice copy as per their requirement. Yes or no? Yes, ma'am. Now you have to think, बच्चों.
The seller is always in a risk zone. He's always in tension. He has a fear of losing these amounts. He has a fear that a buyer will not give him the amount on time. He has a fear that a buyer may run away. He has a fear that this invoice copy alone will not help me to pass a case against the buyer if the buyer runs away. Are you getting my point? There are so many things that is going in our mind. Seller sell goods to the buyer. No doubt he exchanges the invoice, but if buyer runs away, that invoice copy will not be the complete authentication proof to sue him in the court. Now you have to understand what is bills of exchange. Now the seller, to safeguard himself from the buyer, the idea is always of the seller. Now the seller, to safeguard him, he has gonna use a brilliant idea. Now the seller, to safeguard himself, he is gonna use a brilliant idea. You know what idea the seller will tell? Seller will tell, I am sending you a document wherein I am writing all the details of our transaction. Even I am signing this document. In this document, I am writing all the dates. Date in which this transaction has taken place, that credit period which I have given to you, the credit period which I have given to you, and your due date when you have to give me the payment. It means it has the detail of your transaction, date of transaction, amount of transaction, when you have to pay the entire amount, and what is the tenor, matlab period of credit I have given. This document I will send to the buyer and even ask him to sign. Obviously, buyer has done a transaction with me, so he will not say no to this. He's gonna definitely sign the document because it is nothing. It is the same thing which has taken place. Only thing is I've converted my transactions into a document wherein I've noted down all the points, and that document has been verified and authenticated by the seller and affirmed by the buyer. Yes, he agrees to the terms and conditions. Am I clear? This document becomes a negotiable instrument. This document is known as negotiable instrument. Am I clear? Matlab, this instrument is valid in the court. If buyer fails to pay me the amount through this instrument, I can sue him in the court. This negotiable instrument is a legal document. It can be used as a proof in the court also. So here if seller will feel राम, मैं वापस हिंदी में रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लो. एक बार इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीट करती हूँ, फिर हिंदी में रिपीट करती हूँ. डोंट वरी. आई थिंक पूरा मिक्स क्राउड आ गया है इस बार. कोई बच्चे एक्सट्रीम है जिनको इंग्लिश ही आ रही है, कोई बच्चे एक्सट्रीम है जिनको हिंदी, बट डू नॉट वरी, मैं दोनों पार्ट कवर करती हूँ. राम, मैं दोनों पार्ट कवर करती हूँ. फाइनली जब ये इंस्ट्रूमेंट एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट बन गया, नाउ वी नीड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर इट because it is also a valid instrument. This instrument in total is known as negotiable instrument. But for the seller, this instrument is known as bills receivable. And for the buyer, this instrument is termed as bills payable. But whether I tell you bills receivable or bills payable, both combined is the term taken from the chapter negotiable instrument. Taken from the chapter negotiable instrument. Am I clear? When I have issued an instrument known as bill receivable, it means seller feels कि now this bill receivable will give him money. This is more powerful than the before invoice. So you know what the seller does?
seller makes this bill receivable as his assets now. Now this transactions money we will be getting through the instrument called bill receivable, and we thought earlier that the buyer will be giving me this money. No doubt now also buyer will give me this money, but the buyer is giving this money against bill receivable. So the second entry, what will happen when we issue a BR becomes our asset, and our old asset is no more that important because we have got more powerful asset now. We will close this buyer. And anyways, for each transaction, we can have only one asset. If I create buyer also and if I create BR also for same transaction, I cannot collect money twice. One with the buyer in the name of buyer and another again with the buyer in the name of bill receivable. So buyer name is reversed because we have created another asset, bill receivable, for the same transaction. Clear? Similarly, in this case, we have a liability in the name of seller. But since we have accepted a liability for the same transaction in the names of bills payable, our earlier liability will get closed in the name of seller and new liability will take place in the name of bills payable. I hope I am clear to everyone. I hope I am clear to everyone. Fatafat bachcho, I am giving you a minute pause. Do like, share, click on the bell icon and subscribe for our channel. Just 1 second and everybody is gonna do it. They are gonna give me thumbs up. They are gonna like my video and they're gonna give me a thumbs up. Let's see how many thumbs up increases within 1, 1, 1, 1, 1. 5 counts. 1, 2, 3, 4 and 5. Done. I think I may got 15 thumbs up. Chalo. Now I hope everybody is clear with the concept of bill receivable and bills payable. I hope everybody is clear with the concept of bill receivable and bills payable. Clear? Very good. Did you understand why bill receivable is an asset which closes our old asset? Why bills payable is a liability and it closes our old liability? Correct. That's it, beta. This was a small concept from my side to you all. If you want to have a detailed learning from me, I hope you have got an idea about my style of teaching, my way of teaching. Just get yourself enrolled for the classes. Call at the other classes 8886 Get in touch with them. Get all the details. Register yourself so that you quickly join our classes. राम, आपको ये पॉइंट हिंदी में समझना था. आपके लिए पॉइंट मैं हिंदी में कहती हूँ बेटा. जब राम, सुनेंगे ध्यान से, जब सेलर ने बायर को पैसे भेजे, माल बेचा सॉरी, तो बायर से पैसे लेने थे, बायर सेलर को पैसा देता. बट प्रॉब्लम क्या होती है, इस ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद हमेशा सेलर टेंशन में रहता है कि इनवॉइस की कॉपी को बायर अपने हिसाब से ऑल्टर या चेंज कर सकता है. एक नॉर्मल पेपर ही तो है, उसमें बहुत रिस्क एसोसिएटेड है. इसीलिए वो एक ऐसा पेपर बनाता है, स्टैम्प पेपर लगा के, स्टैम्प लगा के, जिसमें वो सारी डिटेल्स लिखता है, खुद भी साइन करता है, सामने वाले से भी साइन कराता है, एंड इट बिकम्स अ वैलिड लीगल इंस्ट्रूमेंट या वैलिड इंस्ट्रूमेंट. और ये इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए असेट हो जाता है बिकॉज उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट मुझे पैसे मिलेंगे, और वही इंस्ट्रूमेंट बायर के लिए लायबिलिटी हो जाता है बिकॉज उसको उसके अगेंस्ट पैसे देने हैं. मेरा असेट, उसकी लायबिलिटी. बट मैं एक ट्रांजैक्शन के लिए दो असेट नहीं रख सकती, तो पुराना असेट जो मेरे कम काम का था उसको बंद किया, और नया असेट जो मेरे नई लायबिलिटी जो मेरे ज्यादा काम की थी उसको लेंगे, पुरानी लायबिलिटी को बंद करेंगे. नया असेट जो मेरे काम का है उसको लेंगे, पुराने असेट को बंद करेंगे. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन.
चलो फटाफट सारे बच्चे थम्स अप देंगे. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? बस बेटे एक छोटा सा 40 मिनट्स का स्मॉल डेमो मैंने आप लोगों को दिया था, जहाँ पर मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है. ज़्यादा तो अभी कुछ कराया ही नहीं है. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी बातें हैं. वो हम कल की क्लास में डेफिनेटली नहीं, कल की क्लास में मैं अलग से फिर एक चैप्टर लूंगी, उसकी छोटी सी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, सो एज टू गेट एन आइडिया अबाउट द चैप्टर्स. Yes? Quickly, everybody just give me a thumbs up. Yes, ma'am, we are clear what has been taught in the class. Ravi is telling done. Anushka is giving me a thumbs up. What about others, beta? Ravi, Ram, Poonam, Rishikesh is giving me thumbs up. Quickly, quickly, quickly. Poonam, Prachi, quick. एंड आई होप तुम सब मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है वेबसाइट पे फॉर माय ओल्ड स्टूडेंट्स, आप लोग उसको देख रहे होंगे. क्विक 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 एवरीवन. गुड गुड, वेरी गुड बेटा, फटाफट. Everybody quick. Great beta Ram, keep joining our session. Waiting for everyone tomorrow again to join our session at 9:30. These sessions are just a small introduction from our side to each one of you, so that you get familiar with the teaching style and the faces at Agarwal classes. These are not the complete gist of the chapter beta. It is just a glance, a look of the chapters or in the accounts and how do we go ahead with it. Thank you so much, Bachu. Have a great day, great time. Stay safe, stay well.